सो बिगिनिंग विद इट आई से ऑलवेज एज आई रिपीट PCS नाल प्रोडिक्शन ते प्यार बहुत वधिया रहा। क्यों? वी सैड 3 तरीक ਨੂੰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ देयर। ਨਾਓ देयर इज़ वन मोर prediction to it, but obviously I'll tell it in the last. So our session would be based upon analysis first. नोटिफिकेशन हर कोई दिखाएगा, मैं भी दिखाऊंगा, तुसी भी देखी हुई है भी की कुछ है, पैटर्न की है, वो करांगे गल। बट पहला आपां देखिए भी की एनालिसिस की है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, then you will find out. my mission is कि ਤੁਹਾਨੂੰ honest picture ਮਿਲੇ, है ना। सिर्फ सिलेबस देख के ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ जीके, बट क्वेश्चंस हुने ਤੁਸੀਂ देखोगे तो they are far away from basic जीके, है ना। So what we'll do is we'll present you an original picture, an honest picture from the question paper, that what is happening and what is expected, कि भाई की चीज़ हो रही है तो की आपां एक्सपैक्ट करिए, राइट। सो विद दैट बिगिनिंग वी वुड वांट कि यार आपां पहला ही कोर्स भी उदां ही डिज़ाइन करिए जिहड़ी चीज़ एक्सपैक्टेड है, नॉट दैट कि मैं पहला 10 साल तो किताबां बनाइया हुई हैं वही पढ़ा दूंगा, वही मैं पढ़ाई जा रही, दैट इज़ नॉट टू बी डन, है ना। बिकॉज बेसिक अब जितना मर्जी पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पेपर देखना समझ आएगा। नो सिंगल बुक कैरीज दिस इंफॉर्मेशन। मे बी यूल फील कि सर ये तो करंट अफेयर्स का पेपर था, है ना। सो द पेपर नीड्स टू बी प्लान, द प्रिपरेशन नीड्स टू बी प्लान नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑफ द सिलेबस बट ऑल्सो ऑन बेसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज वेल एज द अदर पेपर्स कंडक्टेड बाय PPSC। सिर्फ PCS एग्जीक्यूटिव द एग्जाम नहीं लेंदा PPSC, इट टेक्स अदर एग्जाम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल दी PCS प्रमोशनल एग्जाम होया होने, तुसी रिजल्ट देखे होने, है ना। PPSC नायब तहसीलदार पटवारी ओ वाले एग्जाम्स भी होंगे ने पंजाब च। सो ऑल ऑफ दैट वी नीड टू गार्नर विद इट, राइट। सो वील बी डीलिंग विद ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड द प्रेडिक्शंस एज वेल कि पेपर कैसा होना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर इट। पहला पेपर देखते हैं आपां। वी हैव डिवाइडेड इट इनटू कैटेगरीज। हाउ डू वी डिवाइड इट इनटू कैटेगरीज? नॉट दैट कि सवाल किसका बनता है, सवाल वेयर डू वी रीड इट। जब आप तैयारी करते हैं तो सवाल कितों आप चकना, किहड़े सोर्स तो चकना। सो फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी च ओवरलैप है, बट देर आर सर्टन टॉपिक्स जिहड़े इन्वायरमेंट की किताब चों आप सोर्स चों आप कवर करते हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट मन्निया गया। कुछ क्वेश्चन आप जोग्राफी या साइंस तो करते हैं, उन्होंने साइंस मन्निया गया, राइट। सो ऑन दिस बेसिस what is the analysis? The maximum number of questions are current affairs and miscellaneous. What does miscellaneous mean? मिसलेनियस ओवर हेयर मीनस जेडे किताब च GK वाली किताबां च नहीं मिलते, GS के कोर्स च नहीं होंगे। क्वेश्चन भी देखांगे, डोंट वरी, राइट। सो लगभग 25%, 1/4 ऑफ द एग्जाम वॉज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, राइट। सो वी कैन नॉट इग्नोर इट कि यार देखो एक होर गल है, बिफोर स्टार्टिंग आई टेल यू कोर्स का शेड्यूल भी दिखाऊंगा, सारा कुछ दसूंगा भी की शेड्यूल है एग्जैक्टली एंड वट इज़ द फीस एंड ऑल जो सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। बट वन थिंग फॉर श्योर कि यार दो चीज़ां आपां नहीं करनियां, किहड़ियां? कि सिर्फ चक के किताबां पढ़ी जा रहे हैं, या फिर डेली 7-8 घंटे 5 घंटे क्लास लग रही है, 2-3 घंटे वीडियो भी आ रही है, भी ये भी देख लो वो भी देख लो। बिकॉज वी विल फोकस अपॉन दी बेयर मिनिमम तो मैक्सिमम किद्दां कड्ढना, दैट इज़ आर फोटे, राइट। इदा नहीं है भी सब कुछ ही पढ़ाई जा रहे हैं, 4-5 घंटे की क्लास लग रही है, डेली न्यूज़पेपर भी आ रहा है, MCQ भी आ रहा है, सब कुछ आई जा रहा है, फिर बाद च मैं क्लेम कर दांगा भी सारा पेपर मेरे किराए च आया, चाहे पास कोई नहीं होया और रिजल्ट आने तो बाद क्लेम भी सारे कर ले। बट वट इज़ टू बी डन, नॉट एवरीथिंग इज़ टू बी थ्रोन। जे एवरीथिंग ही पढ़ना तो गूगल पढ़ लो यार। टीचर का कोचिंग का रोल ही की है टू गार्नर दी मैक्सिमम आउट ऑफ द मिनिमम, राइट। एफर्ट उन्ना होए जिन्ना तुसी कवर कर सको, जिन्ना तुसी रिटेन कर सको। इन्फॉर्मेशन सिੱਟਣ ਦਾ ਸਾਡਾ कोई रिवाज है नहीं, राइट। सो लुक एट द क्वेश्चंस ओवर हियर अगेन। इकोनॉमी वाज वेरी हैवी दैट ईयर। अर्लीयर इकोनॉमी वाज अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस ओनली, बट लास्ट टाइम इकोनॉमी वाज वेरी हैवी। हुण तुसी ये मान के चलो जिन्ने पेपर बनाना है, कौन बनाऊगा पेपर? द प्रोफैसर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, उन्हें पेपर बनाना। सपोज यू आर दी प्रोफैसर, हुण तुसी पेपर बनाना, वट विल यू सी? तुहानू एक तुसी नौकरी कर रहे हो, सीनियर प्रोफैसर हो, तुहानू रिक्वेजिशन आ जाती भी 5 क्वेश्चन भेजो। सो वट विल यू लुक एट? यू लुक एट दी प्रीवियस पेपर,
So it is very likely that pattern might be repeated. Pattern might be repeated in this exam. So ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਆ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, medieval history, especially the period from coming of Ghazni to the taking up of the Punjab Empire by Britishers, that period of history is the most relevant for Punjab exams forever. ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, that period of history is very 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 important, right? So medieval history, great number of questions. Then ancient, ਇੱਧਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, UPSC ਵਾਂਗ ਅਨਆਂਸਰੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਨਆਂਸਰੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ UPSC, ਬਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ, ਆਂਸਰੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਓਨਲੀ 2, that's not very relevant since ages for Punjab PCS, right? Then world history and culture. One more thing I would like to mention over here, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਡਿਬੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 8-10 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਅਦਰ ਸੱਚ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 30% ਆਫ ਦੀ ਪੇਪਰ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਆਊਟ ਆਫ दैट पार्ट only. So it is easily assumable कि now the paper would be at least 25 to 30% based upon Punjab GK. So we have to be very analytical in coverage. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, right? So Punjab GK at least I believe 30% of the exam would be made out of this. Any questions ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਾਰ online offline ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, any time you have the mic access, right? Let me know as well. So then going further, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, UN ਕਰਨਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਥਿੰਗਸ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਦ ਸਿਲੇਬਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਟੂਡੇ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੈਨ पॉलिटी, सो सॉरी बट पॉलिटी के सवाल आर लेसर, टू लेस क्वेश्चंस। दोज हु आर पॉलिटी के धुरंधर, ओवर हेयर यू विल नॉट गेट दैट एडवांटेज कि 16 और 20 क्वेश्चंस आर अपेयरिंग आउट ऑफ पॉलिटी, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सिलेबस तुसी देखोगे ना, आई विल शो यू दैट, ਉਹਦੇ 'ਚ पॉलिटी ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਲਦੋ ਕੀਵਰਡਸ 'ਚ ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। So our effort should be based upon the applicable weightage of the paper, right? Then environment ji, 7 questions again. Environment was not strictly considered part of it because environment ਦਾ syllabus ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ geography ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, but questions are appearing from climate change etc, right? So then government schemes and policies, ਇਹ UPSC ਨੇ ਵੀ 2024 ਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, but they will be restricted more to traditional schemes of the Punjab government and also the national schemes as well. Both were asked this time. Then coming to science and technology is likely to increase because earlier in the earlier exams 1 ਸਾਲ ਦਾ analysis ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5-7 ਸਾਲ ਦਾ analysis ਚੱਕੋ, science was at least 10 to 15% of the exam, right? So we cannot ignore it. As I said कि we are basing the preparation on analysis, बट नॉट ओनली ऑन अ सिंगल पेपर, कि क्योंकि सीटां वधियां, इन्नियां सीटां नहीं सीगियां तो पैटर्न हो सकता है थोड़ा जिहा पुराने वांग भी शिफ्ट होए। तो वी विल कवर बोथ बेसिक थिंग्स टू द करंट जिहड़े क्वेश्चन बन रहे हैं हुणे देखते हैं, राइट? देन पंजाब जीके डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, ओनली 3 क्वेश्चन वर देयर, 3 फ्रॉम जीके, 3 फ्रॉम करंट अफेयर्स। दिस नंबर हुणे पेपर अप्रैल च होना है, इसी क्लास च आके तुहानूं मिलांगा, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, at least 25% ਆਫ ਦੀ ਪੇਪਰ ਔਰ ਮੋਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 5 ਤਰੀਕ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਿਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਟੂ ਇਟ।
right? So now let's look at the questions one by one. We're not answering. The objective is not to answer the questions today. Objective is ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ topics ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ questions ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? That's what we are supposed to see. So look at this. World Health Organization has declared, remember ਇਹ paper 2021 ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ time polio free was in news. If you were preparing the current affairs, you would have read this. ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਜਸਟ ਦੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੀ ਅਗੇਨ ਹੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ, ਬਟ ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ ਸਮ ਅਦਰ ਟਾਈਮ. ਈਜ਼ੀ ਹੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੀ 15th ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਮਿਟ. ਯੂਰਪ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕਸ ਆਫ EPSC. ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਵੀਲ ਕਵਰ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਏਗਾ. ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਮਿਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟ, right? Strategic partnership हुई है, adopted declaration, again very easily answerable, but look at the pattern of the questions. Are they given in the basic books? ਚੱਟ ਲਓ NCERTੀਆਂ ਜਾਂ NCERTੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਕਲੇਟਸ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ. ਐਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਰੋਪੋਲ ਐਂਡ CBI. ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੇਪਰ, PCS ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ. ਐਂਗੋਲਾ ਐਂਡ ਨਾਈਜੀਰੀਆ. ਇਹ UPSC ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, PCS ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ. ਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਐਂਗੋਲਾ ਐਂਡ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਰ ਲਾਰਜੈਸਟ crude suppliers. India and Angola signed a bilateral energy cooperation agreement. Is it happening? Is it covered by the basic books? No, we have to focus upon things, right? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਿਰਫ IR ਦਾ ਹੈ. What is this Yuzulani consensus was in news at that time, right? And during the recent India AU summit, the uniting consensus has been strongly supported. Look at the type of questions. I'm not answering them. Topics ਦੇਖੋ ਤੇ question ਦੇਖੋ. ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ CSAT ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਕੱਟ ਆਫ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੈਲ, 245 ਔਰ 247. 240 'ਚ ਸੀ, 400 'ਚ. ਇਸ ਵਾਰੀ GS 'ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪੇਪਰ, ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਟਰਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਰੈਸ਼ਰਸ. ਲੈਵਲਰ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, है ना? Nobody knew before January 2nd और 3rd और this January कि भाई पेपर आ रहे हैं. 90 days लगभग सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ हैं, है ना? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਨੇ हैं. But the issue is कि there have been people preparing for it, now they want to keep on applying for it and the competition is likely to increase. So not less than 50% is supposed to be the cutoff. Not less than 50%. The rest dependent upon the paper, but I think not less than 50%, right? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ. ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. A second phase of cotton technical assistance program for African countries. 2 ਆਣੇ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ, right? So African countries ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ. Do we cover it anywhere? If we focus then we can cover. ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, right? Then further, hydropower sector cooperation between India and Bhutan. Those days India, Bhutan and China was in news, है ना? उस टाइम ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਦਿਸ ਮੰਗਤੇਚੂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਦ ਅਜੀਬ ਜੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਖੋਲੋ ਗੁੰਚੂ. ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਇਟ ਰੋਂਗ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਫॉर दैट, है ना? So these kind of things. Then the Chuka HEP or HEP Kura Tala HEP hydroelectric project between Bhutan. Again pattern, only one and 2, only 1 and 3, and now it is likely that we will get the easier kind of MCQ. How many of these statements are correct? People say that is difficult. I'll prove it, it's easier. How many is easier than this, right? Going further, जल्दी चलते हैं थोड़ा. वैक्सीन मैत्री, कोविड टाइम चल रहे हैं 2020-21 ਚ. वैक्सीन मैत्री न्यूज़ 'ਚ ਸੀਗਾ, आ गया सीधा सवाल. Following countries became the first recipient. They did not ask what is vaccine मैत्री, simple हो जाता. First recipient कौन सी ਇਹਨਾਂ 'ਚ? नेपाल, भूटान and etc. Right? So try gauging the concept कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ यूरोप भी पूछ लिया, अफ्रीका भी पूछ लिया, neighborhood भी पूछ लिया, है ना? India and its neighbors, India and Europe and Africa and India. They have asked all the 3. And
all of them are not based upon traditional knowledge of neighborhood policy, neighborhood first policy, look east, look west, act east. It's not based upon that. So remember the types of questions. Then which among the following nations owing to its steady economic growth has recently graduated from UN's official list of least developed countries? तो UN भी पूछ लिया जी, सिलेबस च मोटा मोटा मेंशनड है UN. We cannot forget that. Basics as well as the current. UN करना ही करना. So focus upon the syllabus. I'll come to that. Then we come to the government schemes. देखियो जी ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ डिटेलों च पूछी हुई हैं. Which of the following statements are correct? DNA technology use and application for establishing identity. Easier हो जाती statement. Then made up of 26 pairs. This is basic नाल mix कर दिया. कितने pairs होते हैं? 23 होने pairs कि 46 होने? 23 pairs, that is 46, right? So DNA is composed of two chains which coil around. So basic and चीज़ नू mix करता. This is also happening. Then further the Union Cabinet recently approved the new education policy. सीधा सीधा न्यूज़ च सीगा. Big news. One pattern, notice it. UPSC does not ask big news. जो हमेशा न्यूज़ च रहिंदा UPSC ਉਹਦਾ सवाल नहीं पूछदा. State services, especially PCS, asks you that जो ज़्यादा न्यूज़ च हैगा. And the options, some people might say कि नहीं है UPSC बन गया. नहीं. Options are always factual. Compulsory allocation of 4%. फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल ऑप्शंस ही नहीं है. सो डोंट फॉल फॉर द आइडिया कि यार यूपीएससी भी आ रहा है, मैं करता रहा करंट अफेयर करता रहा बट आना कुछ हो रहा है ना. सो एम्स टू ब्रिंग अनकवर्ड एज ऑफ ग्रुप 3 to 6. एवरी स्टेटमेंट इज मेड आउट ऑफ फैक्ट्स राइट. तो इन्हों आप एक तो लर्न रिटेन करने लिए निमोनिक्स किद्दां करने हैं, तो फैक्ट्स वाली स्टेटमेंट को हैक किद्दां करना है, वो चीज़ां आप जरूर सीखनी है. Right, the policy envisages to set up gender inclusive fund, etc. All these facts are made up of the options. Then consider the following about one nation one ration card scheme, again in news. So the scheme allows portability of food security benefits. Aadhaar linkage of ration cards of migrant workers is not mandatory. Not आ गया, इन्हों भी आपां करांगे handle. So just look at the type of questions. किथे रुकना होए, I am going faster because I want कि थोड़ा time is very ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ. ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ PDF, no worries about that. So then mineral laws bill has been recently passed. Mineral laws, do you see UPSC in this? Minerals ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ. They've also made it, but look at the type of questions. With introduction of this bill, companies which do not have any prior coal mining experience can also participate. ये statement बारे की कहूँगे तुसी, है ना. हाँ, private companies will now be able to undertake coal mining. Again very simple. जे नहीं भी आंदा तां भी आंसर होता है. Then a composite license, namely prospecting license cum mining lease, has been introduced. One of the major features च ये गल्लां सीगियां of this bill. Right, then revenue sharing model detailed in bill is based upon the recommendations of an expert committee headed by Injeti Srinivas. So every statement has one fact to it. Then जी, consider the following medical termination of pregnancy amendment bill. Too much in news. जब extend किया गया सी, है ना, weeks extend किए गए सी, and there were tweaks or changes in the approval by doctors कि इन्ने हफ्ते हैं तो इन्ना डॉक्टर अप्रूव करेगा, etc. सो ये बारे भी स्टेट लेवल दोबारा फैक्ट आ गया जी, 24 वीक्स, नंबर खेल रहे हैं. देन द बिल स्पेसिफाई द सर्वाइवर्स ऑफ रेप विक्टिम्स एक्सेट्रा, फिर नंबर आ गया जी, राइट. हले तक चूज 1-2 है, बट आई एक्सपेक्ट दिस टू चेंज एज वेल. आई होप यू रिमेंबर द स्टेटमेंट्स इन UPSC. हाउ मैनी ऑफ द अबव आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली 2 statements, all the 3 statements, none of the above. That is also likely to be included. एक बड़ी अच्छी गल सुनाना जान तो पहला अगे, लास्ट टाइम जब HCS का मेन सीगा हरियाणा सिविल सर्विसेज, HCS मेन्स लेंदा सी जी ऑन प्लेन शीट्स, प्लेन हॉरिजोंटल शीट्स. UPSC मेन्स लेंदा थोड़ा क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट थे. तो हले नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेन सीगा. What I could analyze from sources as well as analysis, I actually asked all my students of mains of that year कि तुसी ना UPSC वाले
क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। then what happens? Instantly the next to next day question come answer booklets appear in the exam, and then all of them are very happy कि sir thank you so much, आपने हमें practice करवा दी, you allowed us this idea, right? So similarly going to current affairs ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ heavy ਨੇ ਜੀ, Union Ministry Commerce and Industry launched National GIS enabled Land Bank. The platform is created to provide database of industrial clusters. Then information available on platform includes forest etc. Look at the type of questions only, है ना, हले आंसर नहीं करने अपन. It will help India in achieving $5 trillion US. कितनी simple statement है. How simple is this, right? Then further, consider the following. Pratiksha is India's first marine ambulance. Factual again. कित्थे मिलती हैं स्टेटमेंट्स यार? What kind of source would you refer to? जे आप तैयारी करनी होए तो की सोर्स होना चाहिए? What should be the source of these kind of things? साडे जमाने च एक किताब आंदी हुंदी सी टिट्स बिट्स, हुन दैट इज स्टॉप्ड आई थिंक. टिट्स बिट्स वाज अ वन लाइनर करंट अफेयर. ਉਹਨਾਂ ਚ 90% of these questions were covered. So those kind of sources. I'll also tell you, although that in private not on camera, कि PPSC ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, what is done and how it is made, that we cannot cover on recording as well, but still a general idea is professors make the questions and they have certain probably sources through which they make it. They have no internet connection over there ਜਦੋਂ questions बनाने, right? Anyhow, हाँ जी, any questions anybody? थोड़ा जोर दी, अच्छा 12 आई, so sorry. So it aims to save the endangered Indian mackerel and olive ridley turtles. ये रहंदे हैं, but is it doing so or not? That is the idea. Then further थोड़ा जिहा होर छेती चलते हैं. ICMR दी नैशनल जीन थैरेपी दी गाइडलाइंस से सवाल आ गया जी. थैलेसीमिया वगैरह पूछ लिया भी की हो रहा की नहीं हो रहा, न्यू ड्रग्स केड़ियां आई हैं. जस्ट क्वेश्चंस दा पैटर्न ऑब्जर्व करते चलो, राइट? नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंशनड द वन सन वन वर्ल्ड. उस टाइम दे वर इन मेकिंग. कित्थे है द हैडक्वार्टर, कित्थे है? गुरुग्राम च है ना. किहदे नाल बनाया सीगा, विच कंट्री? इंडिया एंड फ्रांस. नाउ मैनी कंट्रीज आर देयर. सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अपीयरिंग, राइट? देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नैशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर परसनस. ਇਹਦੇ 'ਚ भी देखो headed by Union Minister of Social Justice and Empowerment, right? This is what kind of statement? We are saying the ages of, under the control of, right? Council is a statutory body under this act. Act है तो statutory होएगी, नकली क्यों बनाएगा अगला, right? So these kind of things we must be very 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 sure of कि यार हो की रहा, सवाल कितना दे आ रहे ने. That is what we are trying to prove in the beginning. Ma'am, you are here late, so we are trying to analyze कि कितना दे सवाल आ रहे ने and how we must prepare, right? Then we'll go on to notification, definitely. Then we'll go on to the schedule of the course as well. But before that, let's at least once look at the complete analysis of the paper. हाँ जी. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently published the draft Environment Impact Assessment notification. It predicts the effect of industrial project on the environment. Word association लग रही है सीधी सीधी, the hack of word association or not? चलो, I'll teach you that. It prevents the proposed activity from being approved without proper oversight. Very simple statements in this question, easily tackleable है. Then recently decarbonizing transport. This question I remember specifically. ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ when I was delivering that PCS batch in 2020, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ over these countries. Very very unique mnemonic we made, and I said यार ਇਹਨੂੰ प्लीज़ याद कर लियो. मैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ, not paper ਦੇ ਟਾਈਮ. ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਰ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ. What is the technology or the schemes of learning that as unique a mnemonic you create and as unique you try to learn it, the more uniqueness the better retention there is. तो ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਜਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਰਿਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ. ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੰਦੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਨਸਕਰੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ.
नहीं चल रहा पेन, बट दिस केम एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी कि यार देखो सीधा सीधा पेपर च आ गया, राइट. सो गोइंग फर्दर, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज कूलिंग एमिशंस रिपोर्ट. कूलिंग रिपोर्ट रिलीज कर रहे सी, कूलिंग प्लान भी बनाया ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ. Based on assessment and development of climate benefits, it lays out actions that can be taken to deliver efficient and climate friendly cooling for all. So these, it is not always कि सारे क्वेश्चन ही फैक्चुअली बहुत हैवी ने, इदां दे सिंपल प्लेन स्टेटमेंट्स वाले सवाल भी ने. बट लुक एट this was specifically, actually if I tell you honestly, this was instructed by the chairman of that time कि पेपर मुश्किल बनाना है. यूपीएससी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੋਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. ਸੋ MCQ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਅਟੈਂਪਟ ਐਂਡ ਹੈਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ. Right, then which of the following statements are correct regarding virtual water trade? ये सुनिया भी नहीं सीगा उस टाइम भी ये कित्थों आ गया, बट मैनेज करना पिया भाई. वर्चुअल वाटर ट्रेड है, हिडन वाटर है कि नहीं. कंसैप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोनी एलन. एक टोनी का नाम, टोनी ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ कि मैं ही किया, अच्छा है ना. then World Water Council is headquartered at Marseille, France. So these kind of questions which are not available in basic books, ਤਾਂ again I keep on repeating, ਉੱਧਰ ਨਾ ਡੁੱਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ. ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਓ 2-4 ਟੈਸਟ. Ministry of Earth Sciences released a report titled Assessment of Climate Change over the Indian Region. It is the first ever attempt to document and assess the climate change in different parts. It highlights the observed and projected changes. देखो, look at the length of the statement and the length of the question. Would you believe कि इस time 30 to 40% of the aspirants could not complete the GS paper? नहीं तो GS पेपर ਆਪਾਂ किस टाइम किसी ने दिया सी वाला पेपर यार, कोई हैगा ਇੱਥੇ? ਓਨਲੀ 1 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਤਾਂ ਬਟ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ. ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼. ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? देखो जो माइक नहीं ऑफ करोगे मैंने मीटिंग ऑफ करनी पैनी है. चलो थैंक यू. सो दिस इज़ हाउ साडे इत्थे ना क्लासां ऑनलाइन भी इदां चलदी कि माइक दा एक्सैस तुहाडे कोल रहिंदा, बट विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐ नहीं भी क्लास चल रही है, तुसी कोई गल पुछनी है यू कैन आस्क मी, है ना. जे किसी ने पुछना हैंड रेज किया है तो यू कैन से आउट योर डाउट. जे नहीं पूछना तो प्लीज़ अपना माइक, जे ऑनलाइन भी ला रहे हो ऑफलाइन भी ला रहे हो, देर विल बी नो डिफरेंस. ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड एक नाल मिलेंगे. देर वुड बी नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट, राइट. बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, हाँ जी चलो. सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस का सवाल देख रहे हैं आप. फर्स्ट एवर अटैम्प्ट टू डॉक्यूमेंट एंड एसेस इंडियन मैट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाल कोयंबटूर च. सो डिटेल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. दैन आशा वर्कर्स से सवाल आ गया जी. दिस इज मैनेजमेंट ऑफ दी, हाँ जी वो तो कोई गल नहीं, एडमिट तो होंगे ही रहने हैं. जल्दी चलें. देखो पंजाब का पेपर है, इस च मना नहीं कर सकते आप. वी आर अलाउड टू, है ना. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾउड ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ. एवरीबडी, आई होप मेजॉरिटी ऑफ अस वुड बी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पंजाब, है ना. एनी हाउ, सो लेट्स गो अहेड. आशा वर्कर्स से आ गया, NRHM ते, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ते. अगैन बेसिक करंट अफेयर्स एंड GK ऑफ गवर्नेंस. आशा वर्कर ते तुसी कदे पढ़े? वेरी डिफिकल्ट, है ना. देन इट वर्क्स विद विलेज हेल्थ. आशा वर्कर्स से पूरा डिटेल्ड सवाल, अगैन डिटेल्ड एंड लॉन्गर ऑप्शंस. Then further the government of India has announced linking of Lakshadweep Islands. It is not only कि सिर्फ पंजाब तो सवाल आ रहे हैं, ये ना सोचो लक्षद्वीप की खबर है तो नहीं आऊगी, आई हुई है ना. Then the project will be executed in PPP mode, etc. ठीक है. Then India's first gas exchange.
दिस वॉज टू मच इन न्यूज़ एट दैट टाइम IGX कि भाई गैस एक्सचेंज का मेकअप किद्दां होएगा, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होएगा, दहेज एंड हज़ीरा नूं किस नूं कनैक्ट करेगा एटसेट्रा. अगैन लुक एट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस. लॉन्ग ऑप्शंस बेस्ड अपॉन थिंग्स विच आर नॉट इन द बेसिक बुक्स, विच आर नॉट देयर इन बेसिक. अपनी बेसिक जीके दी जिहड़ी किताबां हुंदियां, बुकलेट्स हुंदियां भी हिस्टरी दी है, जोग्राफी दी है, उन्हां च नहीं है सवाल, वो देखण दी लोड़ है. Then recently Pan India real time market and electricity was launched. IGX आया, फिर आ गया एनर्जी फोकस, है ना. वो IGX गैस वाला सीगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया. फोकस ऑन एनर्जी थिंग्स. देन नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ. So then international maritime organization, this is always very important. IMOs, ਇਹ UN clause ਤੇ IMO ਤੇ question ਆਉਂਦਾ, UPSC ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ. So has recently recognized India's IRNSS, है ना. So again from news, factual news. Then further जी, the Bureau of Indian Standard has prepared a draft standard for supply of piped drinking water named as Drinking Water Supply Quality Management. After treatment the drinking water should conform to IS 10500. ये कोई सवाल बनता पूछने वाला यार? Does this make even a question? I don't think so. Adoption of district metering area concept to control leakages. Water audit should be conducted on quarterly basis. एक ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ audit, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਈਅਰਲੀ, ਰਾਈਟ. ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਅਹੈਡ, ਵਿੰਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫਿਊਲ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਵਿੰਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀ what are the characteristics, right. But this is again because ਇਹ concept ਤੇ based ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ easily understandable and attemptable ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Then consider the following statements regarding stearine gas leak from LG Polymers plant in Visakhapatnam. Recent leakage, सवाल आ गया जी, right. Again detail च लंबियां options and this kind of question is usually difficult to attempt because सारे permutations इत्थे आ जाने, only one, only two, both and none, everything is covered, right. Then Jigyasa program of Council of Indian Council of Scientific Research and Industrial Research, CSIR, right. ਇਹਦਾ question आ गया, again detailed, जल्दी चल रहे हैं भी छेती कर लिए, सवाल आंसर करांगे, डोंट वरी, सारे आंसर्ड होंगे, right. Consider the following pairings of names of government initiated portals, matching of the portals. 2020 and 21 च digitalization ਦਾ ज़्यादा पुश आंदा जब कोविड आंदा है ना. Then we have that CoWIN app and etc. So we have this question easily predictable at that time. Then consider the following respect to export preparedness index 2020. It was published by Niti Aayog in partnership with Institute of Competitiveness. So ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੀਟੇਲਸ ਪੁੱਛੀਆਂ. every detail is to be answered, not only one liners, right. Then further, the COVID-19 pandemic has exposed the vulnerability and plight of sex workers. ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ COVID-19 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਕਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ. ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ, the plight of sex workers, what has been done for them. And again statement 1 and 2, only one correct, only 2. Add ki they might follow UPSC and say out of the 3, second statement explains first, third statement explains first, those kind of questions can be expected. Then consider the following, देखियो सवाल जरा, केड़ी स्टेट है? Odisha, it is not Punjab. And some might guide you कि यार पंजाब की न्यूज़ देखो, उड़ीसा की क्या करनी है, इंडिया एंड पंजाब. But Odisha has launched this mission. This was unpredictable and sometimes also misguided as well कि यार उड़ीसा की न्यूज़ की करनी है. ਜਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी पंजाब 'ਚ घटदा जा ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ. crop diversification, water saving, all these things need to be focused upon. Then recently again in controversy, जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था उस टाइम, आता था, ये आता है, चलो मोबाइल ताली. Anyhow, so जल्लीकट्टू
दैट वाज अ फाइट अमंगस्ट एनिमल्स, राइट। बुल्स की लड़ाई कराई जाती थी, उसको इलीगल किया गया था, फिर उसको रोक दिया गया कि चलो करने दो अपना फेस्टिवल। देन इसको विद प्रिकॉशंस अलाउ किया गया, फिर उस पर केस चलता रहा। बट द क्वेश्चन दिस वाज समथिंग ईजियर। पहली बार क्वेश्चन आया जोड़ा एक एक ऑप्शन है, एंड समबडी हियर सेज कि चलो शुक्र है एक तो आता है। केड़ी स्टेट है मैडम? तमिलनाडु। चलो एक तो आ गया। हाँ जी, पूरा पूरा पेज। नाउ कम्स आवर फेवरेट और एंशंट हिस्ट्री। बट हिस्ट्री fortunately is better. Sangam text suggests several stages of social evolution. Narrative texts show that Tamil people of times were primarily pastoral. कोई बड़ी बात नहीं, nothing big, है ना, nothing too difficult. No reference to trade and economic activities has been made in these texts. No reference. अब ये नहीं बताने हैक्स, पैसे नहीं देंगे लोग मुझे, है ना। We'll come to that, don't worry. But history, look at it, it's simpler. ये मिल जानी है किताबों च, है ना। मोहनजोदारो च की मिले जी, ब्रॉन्ज इमेज, टाइट इमेज, टेराकोटा, दिस इज कवरेबल। ओवर हेयर यू नीड टू रिवर्स दी स्ट्रैटेजी फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी की स्ट्रैटेजी होंगी भी हिस्ट्री ते ज़्यादा फोकस ना करो, सवाल इदा आंदा भी सुनिया भी नहीं होंदा, है ना। दे आस्क यू सम, आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस क्वेश्चन इन 2013 और 14 इफ आई रिमेंबर, एक कलियारी पयट्टू क्या है। फर्स्ट टाइम तो बोलिया भी नहीं जा रहा सी, पता था की होना की है ना। मैं कहा ये तो अननोन चीज़ है, बट ऑप्शन चो सीगा नहीं, राइट। सो यूपीएससी गिव्स यू दीज काइंड ऑफ अननोन थिंग्स। हुन तो यू माइट बी नोइंग व्हाट इज इट, व्हाट इज कलियारी पयट्टू? मार्शल आर्ट है, दिस इज अ मार्शल आर्ट। बट एनी हाउ हिस्ट्री ओवर हेयर इज समवट ईजी। हिस्ट्री कैन बी योर, लेट्स से योर एडवांटेज और द पॉइंट वेयर यू स्कोर मोर, सो वी कैन फोकस ऑन इट। चोला अंपायर का आ गया जी, ये किताबों च मिल जाता है। ओरन सभा, वेयर यू रीड बेसिक थिंग्स, है ना। द विलेज अफेयर्स वर मैनेज बाय एग्जीक्यूटिव कमिटीज़। द्राविड़ा स्टाइल बृहदेश्वरा टेम्पल, फैक्ट ले आए, राजेंद्र वन था कि राजा राजा वन था, राइट। सो हिस्ट्री इज बेटर मैनेजेबल। लुक एट दिस मिडीवल हिस्ट्री जी। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पालाज। द पालाज वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। चलाकी करने की कोशिश की है, उत्ते लिखा जैनिज्म्स, थले लिखा है Tibet. They spread the Adantapuri University from where the missions went to Tibet to spread Jainism. They tried to create it, right? Try to create a question of difficult level कि तुसी analyze कर पा रहे हो या नहीं. Then Mughal rule under Akbar. One more important topic for this exam is Akbar. ध्यान रखियो अकबर ते क्वेश्चन आ जाता अधिकतर। अकबर एंड महाराजा रणजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। अकबर ओपन द इबादत खाना, सिंपल पता ही है सारे। दैन अकबर इशूड द महजरनामा, डिवाइन वाली जी अपनी डेकरी सीगी, है ना। सो हिस्ट्री इज समवट कवरेबल। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय शेर शाह सूरी। सिंपल अगैन कि इन्होंने जीटी रोड बनाई है, रुपया लेके आए, वो पढ़ते हैं आप, हो जाएगा, राइट। दैन विद रेफरेंस टू दहसाला एंड बट्टी एंड नसक, ये भी पता सारे ने, राइट। वी हैव रेड दिस, एटलीस्ट दिस। दहसाला बटाई की चीज़ ने है, की चीज़ है जी? लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग तुगलक की अकबर, फिर अकबर आ गया, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द विजयनगर किंगडम। विजयनगर इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर यूपीएससी एज वेल एज पीसीएस। आना ही आना होंगे जब तक सेंटर च एक सरकार है मित्रों वाली, है ना। ये विजयनगर क्यों इंपॉर्टेंट है मित्रों की सरकार के टाइम? वाई? बिकॉज इट इज़ दी ओनली मेडिवल हिंदू पावरफुल किंगडम। बाकी सारे इस्लामिक इन्वेजनस हो रही हैं उस टाइम तो इंपॉर्टेंट है। तो जब दी 2014 की सरकार आई है, इन्हां ते सवाल आंदा ही आंदा, तुसीं ये चक लो, यूपीएससी चक लो, आना ही आना। फोकस ऑन इट, राइट। दैन मॉडर्न हिस्ट्री जी, छोटे छोटे सवाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, स्पैक्ट्रम के पिछे टेबल च मिल जाता है आंसर, कौन कौन सीगा कॉन्ट्रीब्यूशन। हिस्ट्री रिवाइज करांगे, हो जाएगा कम, है ना। देन in the Indian freedom struggle, who among the following revolutionaries carried out their activities abroad? Very simple, back tables कर लो, हो जाना, है ना। We have those in spectrum के back tables if you have read spectrum. If you have not, कोई notes पढ़े होने, ये तो covered होना ही है। This can be covered easily. Then culture च आ जाने। Udayagiri and Khangiri caves, we read about them usually.
दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक कट केव ट्रेडिशन। सिंपल आंसर है भी डेवलपमेंट ऑफ केव आर्कीटैक्चर जे सानू आंदा था वी विल नो कि पहला रॉक कट हुंदा है ते अगे जाके वट इज़ हैपनिंग। हाँ जी, दीज केव्स हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारवेला किंग्स। कित्थे दे सीगे खारवेला किंग्स? कलिंगा उड़ीसा। हाँ जी, सो एनी हाउ द केव्स आर प्राइमरली फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये वर्ड ते फोकस करना आप प्राइमरली। आई विल ऑल्सो यूज दिस इन क्लासेज अलॉट। ऑप्शन की रेलेवेंस है, वील अंडरस्टैंड दैट। Right, then world history ji, this is something different from UPSC. Over here they ask you world history questions in the prelims as well. Political theory and world history इन्होंने पूछनी है and बहुत ही limited जा syllabus है। French Revolution, American Revolution देखांगे and we need to cover it for the prelims as well. इत्थे नहीं छड्डनी। So world history, John Locke, Baron Montesquieu, Jean Jacques Rousseau ਜਿਹੜੇ optional ਇਹਨਾਂ ਦੇ thinkers वाले हैं वो तो easily answer कर देंगे, है ना? So not very difficult but we need to at least refer to it once. ज़्यादा टाइम नहीं देना because simple question है, but refer करना ही करना है देते। From July 17 to August 2, 1945 leaders from allied nations met at Potsdam conference to decide again Nazi Germany, World War तो आ गया, World War II, right? So simple questions ने but सानू आने चाहिए। Then this is done. Then second part of this, just a second. Just a second ji. Any questions from your side? Online, offline, anybody? No questions. सारे शांति नाल बैठे कि इन्ने मुश्किल सवाल दिखाते हुण तुसी कह रहे हो मेरे तो सवाल पूछो, है ना? सवाल ही इन्ने हो गए, हुण कित्थों पूछिए। सो कमिंग टू पंजाब जी के विच इज़ वेरी लाइकली टू इनक्रीज। सो इन्हां दे सवाल ध्यान नाल देखियो की पैटर्न है, यही इनक्रीज होना, यही इनक्रीज होना। लुक एट दिस, अज आखा वारिस शाह नूं, टुडे आई इनवोक वारिस शाह, ट्रांसलेशन भी नाल दिती हुई है ना? इज़ अ फेमस पोएम बाय द रिनाउंड पंजाबी राइटर अमृता प्रीतम, राइट? देन द पोएम इज एड्रेस टू द हिस्टोरिक पंजाबी पोइट वारिस शाह। मैनू लगता है मैंटल ब्लॉकेड हो गया सी, आई थिंक मैंटल ब्लॉकेड हो गया होना, बट अगे उन्होंने चलाकी करने की कोशिश की है। ही इज़ रेफर टू एज शेक्सपीयर ऑफ पंजाब, बट ये इज्जत का तौहीन नहीं होने देंगे, वो ऑप्शन आप कंसिडर करांगे, राइट? देन मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ एंड मिसल्स। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑलवेज, दी मिसल्स, है ना? शुक्र चक्किया एंड ऑल दोज मिसल्स, निशान वालिया, कन्या, नकिया, शुक्र चक्किया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप रेफर करनी ही करनी है, राइट? देन गोइंग फर्दर, महाराजा आ गए, अकबर जी एंड महाराजा रंजीत सिंह जी, आना ही आना है जी, आना ही आना। मेन्स टे मेरे तो हुणे लिख लो, मेन्स टे सवाल आया ही आया, नहीं आया था मेरे तो 5% फीस वापस ले जाओ। होर दसो, इन्नी पक्की गल। देन पंजाब करंट अफेयर्स जी, अ परमानेंट ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर रावी, इंफ्रास्ट्रक्चर ते आ गया। 484 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ध्यान रखना पैना, है ना? फैक्चुअल डिटेल्स। UPSC सैटेलाइट का वजन पुछदा था, ये सैटेलाइट तो उड़ाते नहीं, ये ब्रिज की लेंथ पुछ लें, राइट? देन दीज कल्चरल थिंग्स, फुलकारी, कतनी राई, सिरसी, चंदेरी, दीज आर GI टैग केड़ा केड़ा है, राइट? सो GI टैग्स से भी फैक्चुअल करंट अफेयर्स ही है ये, है ना? दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ एंड पूछ लिया। Then consider the following statements, choose the correct. As per 2011 census, the percentage of agricultural labours constitute more than 30%. Again fact वाला सवाल, 2019 पंजाब had 25 लाख हेक्टेयर्स, अगेन फैक्ट वाला सवाल, बट किदे ते टॉपिक की है? एग्रीकल्चर ऑफ पंजाब। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर के स्टैट्स, इकनॉमिक सर्वे आप कवर करांगे पंजाब वाला स्पेसिफिकली इन क्लासेस, दैट हैज़ टू बी डन, वी विल हैव स्पेसिफिक क्लासेस फॉर दैट। दैन इकॉनमी के सवाल यार फिर भी ईजियर ने। कंसिडर द फॉलोइंग, वर्ल्ड बैंक एलोकेट्स मेंबर्स वोट्स ऑन बेसिस ऑफ शेयर ऑफ बैंक्स कैपिटल, है ना? शेयर होल्डिंग तो होंदा है। देन इंडिया करंटली होल्ड्स मोर देन 5%, नहीं। सो दीज आर बेसिक बिट लिटिल बेसिक ऑफ इकनॉमिक्स। प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग केड़े केड़े ने जी, अगेन बेसिक्स ऑफ इकनॉमिक्स। Then which of the following industries is not part of 8 core industries, again very basic of economics. So economics च की करन दा फायदा है? Basics. History च की करन दा फायदा है? Basics, है ना? So we'll cover accordingly.
which of the following has been characterized as DSIBs, domestically systematically important banks कि ਜਿਹੜੇ too big to fail ਹੁੰਦੇ है ना. So very simple again, ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ. ਦੇਖੋ basic things at least economics ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. small finance banks, banking and finance ਚ question ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ, the pillar of economics. then non performing assets, ਇਹ again news ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਨਾ. these have been in news again. ਹੁਣ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ we were talking about that. so NPA is there, substandard assets which have remained. simple ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ we did this ਹੈ ਨਾ. NPA, substandard assets, lost assets. so simple ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ. ਚੈੱਕ ਟ੍ਰਾਂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚੈੱਕ. this was being done. so that is again a simple thing to garner from the news. then which of the following is the largest network of shared ATMs in India run by National Payments Corporation of India? this was something out of the one liner GK. ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? but national financial system, national financial switch, national electronic financial system, national payment system. look at the options है ना, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. then credit rating agencies ਕੌਣ regulate ਕਰਦਾ ਹੈ? SEBI. simple ਹੋ ਰਿਹਾ. why SEBI does it? why not let's say Reserve Bank of India? शेयर मार्केट को SEBI करता है, क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री शेयर मार्केट को तो नहीं करते लोग, इंडस्ट्रीज को करते हैं, बिजनेस हाउसेस को. these are not banks, these are business houses की रेटिंग एजेंसी, hence SEBI is there. right. which of the following is incorrect with respect to TREDS? incorrect highlighted नहीं है, ध्यान रखियो. it's not as good as UPSC. so TREDS ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ. ਅਗੇਨ that was in news, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. then startups registered with Department of Industrial Policy and Promotion. angel tax ਵਾਲੀ ਗੱਲ, tax payable, the tax, angel tax, we know what is angel tax? ਜਿਹੜਾ angel ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ. angel बन के आते हैं. who are the angels? हैं जी? startup, big investors. angels are big investors, nothing else. there is no angel coming from heaven, right? so angel tax ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ. then usual principal status, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ. usual principal status of the usual subsidiary status and usual principal and subsidiary status ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, right? then India has been constantly negotiating for expansion in the trade services via mode 4. ਇਹ mode 4 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ? mode 1 2 3 4 ਮੈਚ ਕਰੋ, right? so tricky one again. which among the following are sources of non tax revenue receipts? simple basic ਆ ਗਿਆ. non tax revenue ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? revenue ਹੈ, revenue ਹੈ, कैपिटल है. हाँ जी. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स अगेन बेसिक स्टैटिक से आ रहा है. देन WPI मेजर्स, सेम क्वेश्चन. देन कमीशन फॉर CACP एग्रीकल्चर तो सवाल. MSP न्यूज़ च दिस माइट बी रिपीटेड. CACP, MSP, ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी नोटेड वेरी वेल कि की हो रहा, लीगल गारंटी है कि नहीं. ਕਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ. ਵਟ ਆਰ ਇਟਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ? that can be in the question paper itself, है ना. ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੀਗੀ. ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ. ਸਮ ਸਜੈਸਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਐਨ ਐਸਕਰੋ ਬੇਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ. ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ. ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੈ ਨਾ. ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਰਾ 'ਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ. ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, है ना. so those are the things. then according to World Bank's classification of economies into groups on basis of GNI per capita using the Atlas method for the 2020-2021 fiscal year, pointing out again जिस साल पेपर हो रहा है ਉਹਦੀ न्यूज़ ਤੇ सवाल आ रहा है, not very basic. which of the following is not a foreign bank in India? a list of banks होनी चाहिए. हाँ जी. फेडरल बैंक कि HSBC, फेडरल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक. so what I am pointing out is not the answers, I am pointing out what kind of questions are there. मनी बैंकिंग and फाइनेंस पढ़े तो लिस्ट भी बना लेनी है ए बैंक्स ने,
है ना, फैक्चुअल चीज़ां नाल रखनियां। पॉलिटी वाले खुश हो जाओ जी, जिन्हां दी पॉलिटी फेवरेट है, क्वेश्चन देख के भी खुशी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करैक्ट? अटॉर्नी जनरल। पढ़ लो ये शांति नाल पढ़ लो, बिकॉज पॉलिटी वाले सवाल सानू पसंद होंगे सारिਆਂ ਨੂੰ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ इंटाइटल्ड टू ऑल प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू मैंबर ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ मैंबर ऑफ कैबिनेट। गलत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी रॉन्ग। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है फिर, है ना? वेरी राइट। So consider the following. Sixth schedule has conferred district council the power to constitute village council or for courts of trial. Sixth schedule ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। Again statement ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Schedules of the constitution basically ਸਿੱਧਾ mentioned ਹੈ in the syllabus as well. Right, consider the following. Matters concerning trade unions, industrial and labor disputes fall within purview of concurrent list. List भी mentioned है, list and schedules अलग-अलग mentioned है। तो उधरों ਚੱਕ के सवाल बना रहे हैं। Right, the subject of welfare of labor includes conditions of working, provident fund, workmen's comp. Simple statement, है ना? Then consider the following with respect to ordinary bills. ये तो सारी जगह आंदा है, एक सवाल तो आना ही है। Ordinary bill, governor is vested with discretionary power, रख ले आगे दे etc. If a bill is passed by state legislature is derogatory to powers of the High Court, it is compulsory to return the bill. So, compulsory to return the bill? No. Reserve for present, not return. Question the answer नहीं, but type of question देखने होने, है ना? Then as per Scheduled Tribes and Other Traditional Dwellers Act, this is a copy of total copy. Options भी copy. The previous year of UPSC, the factual questions should not be ignored, right? Then which of the following is not a provision of ROPA? ROPA is also another important topic for this exam. Representation of People Act is an important topic always, right? Question पढ़ना तो पढ़ के देख लो, but we are not answering it right now. We are just looking at judging the pattern of the things. Qualifications and disqualifications of parliament and state legislature, allocation of seats, delimitation of parliamentary constituencies, local authorities, etc. कौन सी is not a provision of ROPA? Right, so ROPA is another important topic. Then which article of the Constitution provides that the state shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in mother tongue? 350A 350 A डाल के confusion पाइस। A की 50 A है, confusion क्यों करनी है? 50 है कि 50A है? 50A. Are we sure? No. Yes, sir. There is a confusion, but we are not answering right now. Right? चलो, but kind of questions देखो इधर, kind of questions. Right? Then science ते आ जाने जी। Science earlier was basic biology, physics, chemistry. ਉਹਨੂੰ ignore नहीं करना, but questions ਤਾਂ देखो ना कितना देने। Over here, mesothelioma, डॉक्टर साहब कोई है? बताओ ये क्या चीज़ है? मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैडमियम से हो रहा है, आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, लेड। हाँ जी, डॉक्टर्स को मुश्किल लग रहा है। चलो कोई गल नहीं, सिलेक्ट द करेक्ट। एनीबडी यूज द डॉक्टर वगैरह कौन सी का? नोबडी। ऑनलाइन तो है आई नो, बट चलो कोई गल नहीं। देन दिस इज सम बेसिक। ये NCERT च है, कैटालिटिक कन्वर्टर। NCERT च मिल जाता सानू 11वीं 12वीं वाली, राइट? अनबर्ट हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा इन्हां चो चूज करना, राइट? दिस इज बेसिक एज वेल। देन स्टेटमेंट्स अबाउट द टेरेस्ट्रियल laser scanning and those things are always important over here, sonars and other instruments, वो आना ही आना होंदा है। बट अगैन लंबा क्वेश्चन बनाता, 3D इमेज बनाऊगा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੱਲਿਓਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਓਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ कि हुण तो मैं पास हो जाऊँगा। वी लर्न दिस टेक्निक एज वेल, राइट? देन इन्वायरमेंट से आ जाओ जी। इन्वायरमेंट इज पैसिफिक नेशन ऑफ पलाओ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन कोरल रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन्स, राइट? केमिकल्स लाइक ऑक्सीबेंजोन एंड ऑक्टिनोक्सेट आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स, absorb UV light and thus are harmful to the corals.
ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ the Himachal Pradesh state government is to develop India's first snow leopard conservation idea। हिमाचल पंजाब हरियाणा की न्यूज़ तो आप पढ़नी ही पढ़नी है, राइट। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम इज एन इंटरगवर्नमेंटल अलायंस ऑफ 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज, 12 नंबर अगैन ध्यान रखना है। दैन द सिंबल ऑफ इंडियन इको मार्क, ये 30 रुपए की किताब आती है, केड़ी, दैट इज़ अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे। अरिहंत जी के 30 रुपए की किताब आती है, हुण 35 की हो गई तो मैनू ना कहो। पतली वाली, एक मोटी वाली भी आती है, एक पतली वाली। आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि एक तो वो ले लो, पतली जी किताब है, गो थ्रू कर लो, एक अद्धा सवाल इदां दा गिर जाता। एंड इट अलाउज यू टू रिवाइज क्विकली एंशेंट हिस्टरी, मेडीवल हिस्टरी, इकनॉमिक्स एक्सैट्रा, बहुत छेती रिवाइज हो जाता। 30 रुपए की किताब है, मेरे तो फोटो कॉपी लेनी हो मेरे तो ले लो, नो प्रॉब्लम्स, राइट। सो सिंबल ऑफ इंडियन इको मार्क इज अर्दन पिक्चर, स्ट्रॉ बास्केट, अर्दन लैम्प, बैम्बू पॉट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ओवर देयर। जे क्वेश्चन है प्लीज़ तो ऑनलाइन वाले पूछ लो, नहीं तो प्लीज़ म्यूट कर लो। कौन है अमनवीर जी, प्लीज़ म्यूट कर लो, नहीं था, थैंक यू, नहीं तो मैंने रिमूव करना पैना। सो वाइल्ड वाटर बफलो इज मेजरली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया, रिमूव कर देने उन्होंने, कोई गल नहीं। अमन जी कोई सवाल है अपने कोल? चलो हुन नहीं होएगा श्योर। सो इंडियन लैंडस्केप इज होम टू मोर देन 85% ऑफ द वाइल्ड वाटर बफलो पॉपुलेशन। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगैन आर नॉट फाउंड इन ट्रेडिशनल टेक्स्ट। देन फर्दर जी, corals are endangered marine species and protected under schedule 1 of the wildlife protection act। wildlife protection act is an important topic। ਇਹਦੇ 'ਚ amendments ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ and we must be sure of that। schedules 'ਚ ਕੀ change ਹੈ, ਕਿਹੜੇ animals ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। then ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, please somebody help me, what is this? रिजेंगी डे, पढ़ के दिखाओ जी प्लीज़, की लिखा है anybody? कैरियोफिलिडे, डेंड्रोफिलिडे आर द नेम्स ऑफ कोरल फैमिलीज। पर एक चीज़ नोट करने वाली है, सारियां दे एंड च डे है ना, तो इक्को फैमिली तो चक्के ने, तो इन्ने औखे नाम वो सोच रहा है कि नहीं, ये देख लियो, ये गल भी करांगे ड्यूरिंग दी अटैम्प्ट थिंग। दैन इन व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ CRZ नोटिफिकेशन। CRZ की नोटिफिकेशन की कह रही है, वो देखने वाली गल है, right। So CRZ1, CRZ2, CRZ4, we kept on learning this over those years। ये आना चाहिए है ना, ये सारिਆਂ ਨੂੰ बेसिक आना चाहिए। then which of the following organisms are considered as benthos biotic community? benthos ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? bottom dwelling species, right जी। so coming back, bottom dwelling वैसे it's easier options, starfish, beetles, oysters, easy options, not very difficult। oysters we did probably in the last class, remember last current affairs class yesterday on Saturday we did oysters। otters कीते सी ਆਪਾਂ, oysters नहीं otters। then geography जी, geography it is मध्य प्रदेश श्री राम सागर रिजर्वायर। एक होर लिख लो यार, ये ना डैम्स एंड रिजर्वायर्स की एक लिस्ट आती है, अगैन यू विल फाइंड दिस ईजिली, कोई ज़्यादा जद्दोजहद की लोड़ नहीं, नोट्स भी मिल जाऊगी साढ़े मनोहर पांडे च भी मिल जाऊगी 30 रुपए की किताब च। डैम्स एंड रिजर्वायर इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम, ध्यान रखियो इनू, राइट। देन कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट थाल घाट, ऑल्सो कॉल्ड कसारा घाट, माइकल हिल्स, दूजी स्टेट्स तो, नॉट फ्रॉम पंजाब, ध्यान रखियो। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लेशिएटिक वेटलैंड? एनीबडी नोज द आंसर? ग्लेशिएटिक वेटलैंड, अटेम्प्ट गैस नहीं करना। चंद्रताल और नॉट हिमाचल प्रदेश। चलो एनी हाउ, सो चूज द इनकरेक्ट। मेडिटेरेनियन लैंड्स अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। वेरी कॉमन नॉलेज, कहाँ से आया सवाल है? दिस इज फ्रॉम द
topic biomes, है ना, we cover it in environment biomes. Then olive tree native to Mediterranean region is a very soil sensitive tree. France leads the world in fresh grapes. Cork oaks are typical. Again, this is not a typical basic GK question. Remember that. Then the gentle slope of continental shelves of Grand Banks of Newfoundland is one of the reasons for emerging the largest fishing grounds. Both pelagic and demersal fish are there. So ये सवाल ने बहुत ज़्यादा unique थे, not covered in basic things. Then Sea of Galilee, too much in news these days. We keep on referring to it every week. क्यों? Because ये Jordan river ਦੇ ਨਾਲ Israel ਦੇ Golan Heights ਦੇ ਕੋਲ, it is there. Too much in news, but that time it was not that much in news. Still it was asked. So world geography ਤੇ थोड़ा ज़्यादा focus करना पैना है ना. Then choose the incorrect statement. The Hausa are primarily pastoral tribe of Nigeria for whom cattle is a symbol of wealth. Then Bindu of Australia, क्या Bindu Dibu of Australia are primitive hunters and prefer to stay near the source of water. Right? Then this is thank you, not thank you, but next part. हाँ जी. ਸੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਵੀ. ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ. ਅਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੱਗੇ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਭੀ ਡੂ ਨਾਟ ਫਿਲ ਦ ਫਾਰਮ. ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਆਏ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਮੋਲ ਐਨੋਮਲੀ ਟੂ ਇਟ. ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ 500 1500 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਆਈ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 3000 ਤੇ ਦ ਫੀਸ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਸੋ ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨ ਮਿਜ਼ਨੋਮਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਉੱਥੇ ਫਾਲਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਟਿਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਔਰ ਵੈਨਸਡੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਵੈਨਸਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ 3000 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਲੇ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਹੋਏ. ਕਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਫਾਰਮ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ. ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਟ ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, 31 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਡੇਟ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਫਿਲ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਐਟਲੀਸਟ ਵੈਨਸਡੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਸਜੈਸਟ. ਅਗੇਨ ਅ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, not a practical, or let's say not a something with proof mentioned in the notification, right. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ. ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 315 ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ. ਆਰਟੀਕਲ 315 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਇਰਿੰਗ. ਦੈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੀਨ ਤਾਂ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ 46 SDM ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 46. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 33% women, SC, ST, OBC, EWS, but 46 for SDM is a big number, है ना. Then another one is if you are eligible 17 for DSP, है ना. So this is 28 तक eligibility है. जे eligible हैगे था, this is a very good number. Then the number of vacancies which is actually increasing is 121 for ETO, a huge number, a very big number, right. Then number of posts may be increased or decreased by government at any time before the selection process is complete, obviously. Then दो चेंजेस ने यार, मैं क्विकली चलदा, मैं तो पढ़ के आया, थोड़ा टाइम बच जाऊगा. 2 चेंजेस ने. पहला की हुंदा सीगा कि इफ़ यू अप्लाई अगेंस्ट लेट्स से तुसी स्पोर्ट्स कैटेगरी या PWD कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी च अप्लाई कीता है, जे वो स्टेटमेंट सर्टिफिकेट थोड़ा रिजैक्ट हो जाता सी तां तुसी बेसिक कैटेगरी, बेसिक मीनस तुसी वैसे जनरल तो या रिजर्वड तो
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਇਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਅਲਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो बी वेरी श्योर बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल SC STs वाले पंजाब वाले लगने है ना। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट एक्स सर्विस मैन एंड ऑल दोज कैटेगरीज इफ यू आर अप्लाइंग टू। देन नेक्स्ट चेंज इज बेसिकली अबाउट PWD कैटेगरी। PWD कैटेगरी च पंजाब स्टेट एग्जाम च ना पहला कोई भी सर्टिफिकेट चली जाता सी ते बाद च देख लांगे हो जाता सी। हुण इन्होंने स्ट्रिक्ट होकर अलाइन करता है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिहड़ी एक्ट के हिसाब नाल होएगी, एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होएगी तो थानू मिलेगा, नहीं तो नहीं, है ना। सो बी वेरी 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 श्योर अबाउट दैट। देन देर इज़ अनदर एनॉमली यार। अनदर क्वेश्चन इज सर मैं पंजाबी नहीं दिता, पंजाबी 10th क्लास मैं भरिया होया पेपर। सो इफ़ यू डू नॉट हैव पंजाबी इन मैट्रिक, तुसी प्रीलिम तो फिर भी दे दोगे, बट मेन्स से इंटरव्यू के टाइम प्रॉब्लम आनी है, खासकर इंटरव्यू के टाइम जब चैक होने ने सर्टिफिकेट। वट वुड यू डू? फेक सर्टिफिकेट चलना नहीं। ये नहीं हो सकता भी प्रीलिम के बाद देता 10वीं का पंजाबी का पेपर। सो प्रीलिम तो पहला थोड़े कोल 10वीं पंजाबी होना चाहिए, चाहे ग्रैजुएशन होए ना होए। वन मोर थिंग, सर्टन पीपल आर कॉलेज गोइंग ना कि हाले ग्रैजुएशन होनी है, भी फाइनल समैसटर है। ग्रैजुएशन प्रीलिम तो पहला ना होए कोई गल नहीं, मेन्स दे टाइम थोड़े कोल यू शुड हैव योर DMCs, बट प्रीलिम तो पहला पंजाबी मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट इज़ अ सर्टन मैंडेटरी कंडीशन, राइट। सर हाँ जी सर ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਾਡੇ 10th ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਟ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ। हाँ जी हाँ जी, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सैप्शन, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सैप्शन। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ ਕਿ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, राइट। सो दीज आर दी वैकेंसीज। जनरल 14 काफ़ी ज़्यादा ने जी, किन्नियां सीगियां? जनरल टोटल वर 46 फॉर दी एक्टिव ब्रांच, वी हैव 14 फॉर दी जनरल। सो ऑल दीज कोटाज आर एप्लीकेबल। ज़्यादा नहीं जाना आप ये विच। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए पंजाबी होनी चाहिए है एज वन ऑफ दी कंपलसरी और इलैक्टिव सब्जेक्ट्स, और विच में भी स्पैसीफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ग्रैजुएशन च जिदे पंजाबी सी वो चल जाता है, नो प्रॉब्लम। दैन एज लिमिट ऑब्वियसली इट इज़ 21 to 37, है ना। एंड फॉर द पुलिस सर्विसेज एंड जेल सर्विसेज, पुलिस जेल सर्विसेज इट इज़ टिल 21 to 28, राइट। एंड रिलैक्सेशन ਇਹਦੇ 'ਚ नहीं मिल रही, ਇਹਦੇ 'ਚ फिर भी मिल जाती है, राइट। रिलैक्सेशन फॉर द अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सड अप टू 47 years फॉर PWD कैटेगरी, but this will not apply to DSP and police jail services, right। these are the details we must know। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी बारे किसी का कोई सवाल होए, let me know, I'll answer that rather than using up time over here for everybody। then over here you do not need to submit any offline। पहला हुंदा सीगा भी फॉर्म तुसी ऑनलाइन भरदे सी, फिर ऑफलाइन सबमिट करदे सी to the commission in पटियाला। हुण you do not need to do that, बट अगैन आई से कि फी भरन तो पहला, फॉर्म भरन तो पहला रुक जो हले 2-3 दिन बाद च देखांगे। दैन प्रोसीजर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू फोकस अपॉन, राइट। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्वियसली जनरल स्टडीज़ एंड CSAT का होएगा। जनरल स्टडीज़ से 100 क्वेश्चन ने, CSAT च 80 क्वेश्चन ने, है ना, सेम पैटर्न। बट बिगेस्ट थिंग इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन आइदर ऑफ द एग्जाम्स, नो नेगेटिव मार्किंग। CSAT इज़ क्वालिफाइंग, CSAT च कितने नंबर लेने हैं? 33 नहीं 40। CSAT इज़ 40% क्वालिफाइंग, बट विदाउट नेगेटिव मार्किंग दैट इज़ कंसिडरेबली ईजी, है ना। 5-7 सवाल करके बाकी अपने भी तुक्के मारे हो तो कोई तो सही हो ही जाऊगा। सो डोंट वरी अबाउट CSAT टू मच। दैन प्रीलिम एग्जाम का आई वॉन्ट टू इंडिकेट दी डिटेल्ड सिलेबस एज वैल। एक बारी मेन्स देख लेने, सानू पता भी होना, बट लैट्स रन थ्रू इट। पंजाबी का पेपर होंदा जी 100 नंबर का,
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਐਸਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫੋਰਟੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰੈਂਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੈਕੰਡ ਰੈਂਕ ਫਰੋਮ ਹਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰਸ ਜੀ। ਐਸਏ 'ਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ this also happened with me once upon a time. I gave my students the essay, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਬਟ ਓਰੀਜਨਲ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੋਟ ਦ ਸੇਮ ਐਸੇ, ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਮੋਰ ਮਾਰਕਸ ਦੈਨ ਮੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਰੈਂਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜੇ। ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੈਂਕ 1 ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਰਾਈਟਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਲੇਮਿੰਗ ਐਨੀ ਰੈਂਕ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ, ਹੈ ਨਾ। ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਰੈਂਕਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਂਕ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੈਂਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਂਕਸ, ਕੋਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਸੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ। ਆਲਦੋ ਦ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਜੀਬਲ, ਬਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਐਵਰੀ ਲਾਅ। ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਟੌਪਰਸ ਦੇ 99% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਫ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈ ਫੋਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਫਿੰਗਰ ਸਪੇਸ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਫ, ਫਿੰਗਰ ਸਪੇਸ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀਲ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਡੀਟੇਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥੱਲੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡੀਟੇਲਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡੈਲਡ ਅਪੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਵੀਲ ਡੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੀਸ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੇਪਰਸ। ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ GS ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸਮਵਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ UPSC 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਸਿਲੇਬਸ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਥਿਕਸ, ਬਟ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ethics and human interface, human values, that would be found, probity as well. So सारा syllabus काफ़ी हद तक same है। 1 or 2 big differences are, one in mains is stats आंदा जेड़ा UPSC च नहीं आंदा, stats वाला, and problem solving and decision making is not per se exactly included in UPSC. Same गल है case studies, but it has to be dealt in a different manner, and obviously पंजाब GK ਤਾਂ है ही है ना, that's the big difference. So then I wanted to show यार prelim ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ppsc.gov.in ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਸੇ ਕਿ 31 ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੈਂਸਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲੈਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਬੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫਸ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 10ਵੀਂ ਦਾ, ਯੋਰ ਮੈਟਰੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, of proof of having passed ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। all these documents would be primarily required actually at the time of mains. scrutiny ਤੁਹਾਡੇ documents ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ at the time of mains, and real copies ਕਦ present ਕਰਨੀ ਹੈ at the time of interview. so ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਦ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ, ਰਾਈਟ। एग्जामिनेशन फी, दिस इज़ द थिंग आई हैव अ प्रॉब्लम विद, कि पंजाब ने इन्ना सस्ता किद्दां कर दिया। 3000 ਦੇ 2500 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਤੇ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। 500 ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਆਈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਬਟ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਦੈਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। DSP ਦੇ ਯਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਡਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਭਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਓਨਲੀ ਫਿਲ SDM ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ,
ਜਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਿਲਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਫਾਰਮਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ ਦ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ DSP ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਸ, 6 ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਸ ਨੇ। ਬੈਕਵਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਲਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ 9 ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਸੋ ਜਨਰਲੀ 6 ਆਰ ਦੇਅਰ। ਦੈਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲਈ ਵੀ ਜਨਰਲੀ 6, ਬੈਕਵਰਡ ਲਈ 9 ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੈਫਰ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ, versatile nature of carbon, acids. This shows basically the basic science, everyday science. For example, everyday science 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਊਂਡ, ਲਾਈਟ, ਐਨਰਜੀ, all those things। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗਲਾਸ, ਇਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਪੀਟ, ਐਂਡ 2 ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਊਬਸ ਆਫ ਆਈਸ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਨਾਓ ਬੋਥ ਦੀ ਆਈਸ ਕਿਊਬਸ ਮੈਲਟ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, all these are given in detail. Over here, light and sound in physics would be the most important topic. Sound and light in physics definitely ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, can repeat it, right? So then environmental studies, look at this, composition and structure of atmosphere, geography ਲੱਗ ਰਿਹਾ है ना। Then atmospheric circulation and weather system, again geography ਲੱਗ ਰਿਹਾ। Then climate change, this can be independently environment. Then water, ocean, river, glaciers, geography ਲੱਗ ਰਿਹਾ, right? Then soil types, crops, both environment geography cover ਹੁੰਦਾ। One important topic mentioned is pollution, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ pollution and toxicity। Then political theory and international order, 1-2 ਸਵਾਲ easy ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। political theory ਦੇ basics ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, and these topics mentioned over here, United Nations ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, organs ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, World Bank, IMF, WTO, EU, G20, BRICS, this would be covered। ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਿੱਧਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਆਰ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟॉपिक्स ओवर हेयर, ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 2 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ROPA, rise of regionalism, so ROPA over here, very important। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ, ਆਰਮ ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਰਮ ਚੈਲੰਜਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਨ ਵੀ ਗॉट ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਰ ਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, ਦੇਰ ਵਰ ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਮਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਟॉपिक 1 इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, then आर्यन and Vedic, Jainism, Buddhism, Maurya Guptas, advent of Islam, Mughals, coming of Europeans, लगभग देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ancient, medieval, modern, and world history। world history 'ਚ ਵੀ limited topics, Renaissance ਹੋ ਗਿਆ, industrial revolution, American, French, Russian, World War 1 and 2, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰੇਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਟॉपिक्स 'ਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ, 10 ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, 90 days, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗੇਨ, 1950 to 1991, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ।
Money, banking and finance is very very important over here. RBI always a part of the economics का पेपर, RBI ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, right? Then geography, population distribution, density growth, human geography basically इसमें ज़्यादा mentioned है because बाकी तो उन्होंने उत्ते environment ची cover करती. Water resources is repeated, so water always is a very very important topic for the PCS exam. Then current events of national and international importance. You might have seen this कि ज़्यादातर इदां लग रहा भी सिलेबस आही सीगा. लास्ट ईयर पेपर देख के नहीं लग्या भी सिलेबस ए लाइन सीगी बस, करंट अफेयर्स. हैंस वी नीड टू फोकस. देन दिस पंजाब, जोग्राफी, पीपल, सोसाइटी, कल्चर, हिस्टरी एंड इकोनॉमी, वी नीड टू बी वेरी श्योर कि ये ਵਧਣ वाला है. तो इन्हों पॉइंटर अलग अलग जाके कवर करने जरूरी है विद करंट अफेयर्स, विद इकनॉमिक सर्वे एंड विद बजट ऑफ पंजाब. दैट विल बी डूइंग, राइट. देन पेपर 2 इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. सिंपल सिंपल जी गल है, ਇਹਦੇ 'ਚ 40% लेने ने, ज़्यादा टाइम इनू नहीं देना. 40% किद्दां लेने, लिमिटेड किहड़े टॉपिक्स आपां कवर करने हैं, वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट. अंग्रेजी नू किद्दां टैकल करना, बिना कॉम्प्रीहेंशन पढ़े आंसर किद्दां करना है, वो भी करांगे. बट डोंट वरी अबाउट CSAT टू मच दिस टाइम, राइट. दैन ऑब्वियसली मेन्स, दिस इज़ कमिंग टू द मेन्स. सानू मेन्स का आइडिया मिल गया, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाते टू सेव योर टाइम. ठीक है जी. हुण अपनी मेन चीज़ ते आने जी, लास्ट थिंग, द बैच एंड शेड्यूल एंड फीस एंड एवरीथिंग एल्स. राइट. सो वी आर बिगिनिंग फ्रॉम 9th of January. पूरा ज़्यादा डिटेल च आपां बैच रखिया. बेसिक फीचर्स मैं दसा तो आर प्रायोरिटीज आर मिनिमम से मैक्सिमम निकालना है. पहली बात, वी विल नॉट गिव यू बम्बार्ड यू विद 5-6 आवर्स ऑफ क्लास. 2 आवर्स की क्लास रखी है. मैक्सिमम जो पेपर कोल नूं आंदा, अप्रैल टेंटेटिव है, जे कोल आंदा तो 3 घंटे हो जाएगी, नॉट मोर देन दैट, राइट. मिनिमम से मैक्सिमम निकाल लेंगे. एंड वी विल नॉट अज्यूम दैट यू आर गुड एट एनी थिंग. बेसिक जीके एंड एडवांस्ड करंट अफेयर्स का कॉम्बो रखांगे आप. बेसिक एंड एडवांस करंट अफेयर्स का कॉम्बो रखांगे कि बई थोनू ये ना होए भी पिछले वाले पेपर के पैटर्न ते आ जाए तो सानू याद ही ना हो अच्छा डॉपलर इफेक्ट की सी, सानू याद ही ना हो अच्छा जी ये जिहड़ी लाइट सीगी वो किद्दां चल रही है की नहीं है. वो चीज़ां भी कवर करांगे, नाल ओदे स्पैशल क्लासेस फॉर करंट अफेयर भी रखांगे, राइट. सो एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड ओवर इन डिटेल. जिहड़ा भी चीज़ होएगी उहदा बाद च जिद्दां साइंस कवर हो गया उहदा टेस्ट होएगा. ते नाल वन मोर स्पैशल फीचर वुड बी एवरी क्लास वुड बिगिन विद एन ओरल टेस्ट एज वैल. ये नहीं है भी तुसी पिछली क्लास ला ली अगले दिन आ गए, पढ़ी नहीं. जे नहीं पढ़ी तो ऑब्वियसली पैसे घट लेंगे आप, बट बेइज्जती पूरी कर देंगे, है ना. कि नहीं पढ़ के आए तो क्लास च आके दसो क्यों नहीं पढ़ के आए. आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस. नहीं दसोगे यू विल अगैन आंसर. यू विल बी नेक्स्ट डे यू विल बी कमिंग विद द प्रीवियस क्लास एज वैल. डबल हो जाएगा होमवर्क, राइट. सो यार जिन्हों भी सवाल है प्लीज़ बोल के पूछ लो. सो दीज आर ऑल दी प्लान क्लासेस. संडे नूं थोड़ी CSAT की क्लास रहूगी स्पैशली, सो दैट यू कैन एटलीस्ट कवर दी बेसिक्स ऑफ इट. सारा कुछ कवर्ड है जी. इतने साइंस है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, पोलिटिकल थ्योरी है, विद डेट्स एंड टाइम सब कुछ मैंशनड है, थानू मिल जाना. जोग्राफी इज़ ओवर हेयर, मिडीवल, एंशेंट, मॉडर्न हिस्टरी, वर्ल्ड हिस्टरी इज़ हेयर. पंजाब जीके दे स्पैशल लेक्चर रखे ने जी. पंजाब फिर इकनॉमी आ रहा है, पंजाब दे इकनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर्स के भी लेक्चर अलग अलग रखे ने आप, है ना. ऑल इन डिटेल्स, ऑल विद MCQs एंड प्रैक्टिसेस, ओरल टेस्ट एंड एवरीथिंग वुड बी डन अलॉन्ग विद टेस्टिंग. एंड ऑल्सो वन मोर एडिशनल फीचर वुड बी कि सिर्फ प्रीलिम ते फोकस नहीं कर सकते आप. प्री मेन्स इंटरव्यू तीनों स्टेज तक चलूगा है. बट ईवन वाइल कवरिंग दीज टॉपिक्स वी विल बी राइटिंग आंसर्स एज वैल. कि एक टॉपिक बेसिक हो गया, जिद्दां आप सपोज लेट से साइंस कर रहे हैं, ਉਹਦੇ साइंस च आप लेट से भी दी पब्लिक हैल्थ कर लिया टॉपिक, ਉਹਦੇ च डिजीज़ देख ली, वैक्सीन देख ली, एक्सैट्रा देख लिया. फिर पब्लिक हैल्थ ते मेन्स का ਜਿਹੜਾ टॉपिक बनता वो भी नाल दे नाल कवर करते जावांगे. बट अगैन आई रिपीट, माई एम्फसिस वुड बी कि पहला तुसी प्रीलिम तो कड्डो. ये नहीं भी सारा मेन्स हुणे करा दूंगा मैं, हुणे स्टैट्स नहीं करा रहा. स्टैट्स आफ्टर प्रीलिम होएगा, है ना. प्रॉब्लम सॉल्विंग आफ्टर प्रीलिम होएगा. बिकॉज आई नो दैट मैं तो पढ़ा सकदा, आपां पढ़ा देंगे थानू, जिन्ना तुसी कहोगे उन्ना पढ़ा देंगे.
10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਟੇਨ ਇਟ, right? So that is the challenge we have, and this detailed subject schedule would be provided to you as well. ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਈਡ ਆ ਕੱਲੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ 90 ਡੇਜ਼ ਹੈ, 7 ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ 90 ਡੇਜ਼ 'ਚ, 7 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦੈਮ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਟੇਲ। ਦੈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, GS ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ PDF ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ PDF ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨੋਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦ ਕੋਰਸ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਕਰ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸ, 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਡ ਮਿਲਣਗੇ। 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਹੈਕਸ ਐਂਡ ਅਟੈਂਪਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, everything would be included. And last thing and not the least, ਫੀਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਸਰ? ਸੋ ਫੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ I will do that. For today the fees would be 35,000, right, at one time. If you want to pay installments 2020 ਦੀ 3 ਨਹੀਂ 2 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ 5000 ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਡਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੀਸ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਐਡਡ ਕਿ 5000 ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ 35000 ਨਹੀਂ, 5000 ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ 30000 ਹੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ 2020 ਦੀ 2 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫੇਅਰ ਇਨਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫॉर ऑल दिस हार्ड वर्क, एंड दिस इज़ नॉट ओनली प्रीलिम, प्री मेन्स एंड इंटरव्यू ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇजेस ਲਈ ਇਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, everything possible for passing this exam, I will try to help you in that, right। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਐਨੀਬਡੀ? ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੀ 5 to 7 PM ਹੋਏਗੀ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 5 PM to 7 PM, right। So do we have Monica ma'am? Do you have a mic over here? She's Monica ma'am is a cleared officer. We have 2, one is here, one is here. We'll talk to them कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ suggestion ਹੋਏ, guidance ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, over here she's there. You want to add anything ma'am? चलो, if you have mic access then हाँ जी। Good afternoon, sir. Good afternoon Monica ji, nice to see you. Me too, sir. My pleasure to be here today. हाँ जी, हाँ जी, हाँ I जी। would like to say, sir, once again, I will seek your able guidance and that, and together we will meet again. So, Ma'am, हाँ जी। more or less, sir, the entire strategy that has been explained by you, along with the pattern and the questions that were asked previous time, they are all taken, and I believe that this could be the comprehensive way how we can begin again now. And just I want to add a little thing here was the current affairs part that has to take place, that जी। will be more detailed vis-a-vis the different bills being introduced under subheadings of bills and schemes and summits and the international organizations. हाँ जी। And that, so that we can segregate the current also, it will be easy to revise them when the exam is coming. Yes ma'am, that's how we'll do it. Right, sir. And for the Punjab part, like the history, geography, because earlier we used to do the bare minimum factual part. Bare only. minimum, yes. So up to what extent could be these things will be taken into account this time? We will try to cover it in the greatest possible details which are retainable ma'am. For example, culture might be a focus, right? Right. Sikh history would be a great focus, because that is always being, let's say,
working in the government, you might agree with me that Sikh history has been highlighted over and over again by the present government. Right, sir. It is indeed, and even all the schemes that are there, there are missions to revive the old art, the Fulkari. Exactly. I would just like to add, there was a mission Fulkari launched by our department only. I was a part of it to revive the old. Ma'am, would you supply us documents from your schemes of your department which are in public domain? Yeah, I'll just let you know from that. Right. All these schemes would come in handy. And for otherwise also I would say कि, because now the Ministry of Cooperation has been formed in the center, so Right. likewise their schemes of Sehkar se Samriddhi and all cooperative societies Right. and all they also Yes. become very vibrant issues these days. Right. Cooperative department has been really important for this time, I think. And we have another one from your department over here, ma'am. Okay. She's your Sehkari as well. Anyhow, we'll give her a time to speak as well. Anything you want to add, ma'am? Thank you, sir. It will be there, and I'll always would like to be a part of it again. So, Definitely. Thank you so much, ma'am. Thank you. हाँ जी. thank So it is again कि हम लोग my strategy is कि result claim नहीं करना, result class में आ जाता है, फोटो नहीं लगानी, है ना? We have another one, ma'am. She is also working with Punjab government. So मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इधर आके कर दो, नहीं तो ऑनलाइन को नहीं सुनेगा. ऑनलाइन को भी तो सुनाना ना यार कि आपकी क्या सजेशन है. जस्ट अ सजेस्टिव मोड, नथिंग एल्स. हाँ जी, थैंक यू सर. आपकी तो तारीफ में मैं क्या ही बोलूँ. आई थिंक आई एम एन ऑफिसर बिकॉज ऑफ यू ओनली. अच्छा, ओके सर. हाँ जी. तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट सर इज़ कि 24 आवर अवेलेबिलिटी रहती है सर की. द पर्सनल मेंटरशिप दैट ही प्रोवाइड्स, इट फील्स लाइक कि सर हमारे साथ ही प्रिपेयर कर रहे हैं. मैम पेपर में क्या काम आएगा वो बताओ. मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरे को नहीं आता पढ़ाना. अरे नहीं. हाँ जी. पेपर पेपर में आई थिंक स्टैटिक तो हम कवर करेंगे ही क्लास में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेस्ट चीज़ रहती है आई थिंक दैट इज़ द अटेम्प्ट्स एंड हैक. क्योंकि आपने पेपर देखा, इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, बट जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कैसे टैकल करना इज़ द आर्ट दैट वी नीड टू लर्न. एंड आई थिंक सर इज़ द बेस्ट एट इट. क्योंकि आई हैव बीन टेकिंग कोर्सेज विद सर. मैंने हरियाणा का भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है. हर पेपर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो हैक्स अप्लाई होते हैं. हर पेपर में अलग होता है. यूपीएससी में अलग हैक्स होते हैं, स्टेट के अलग हैक्स होते हैं. तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है सर. Any Thank you. good luck or something to the students? सर मुझे ही तो चलो सबको दुआ, सबको भला. एंड दिस इज़ द बैच आई हैव अनाउंस्ड. आई होप सबको डिटेल्स मिल गई होंगी. और कोई सवाल हो मुझे बताओ, नहीं तो रजिस्टर करते हैं एंड आगे चलते हैं. ठीक है, थैंक यू. Send the question in the writing. हाँ जी बताओ. राइटिंग में? अच्छा राइटिंग में नहीं यार, वैसे बोल के बता दो. राइटिंग चलो पढ़ लेते हैं. Sir, from the analysis, it is indeed clear that you have to have different approach for UPSC and PCS. Considering, sir, that ethics and optional not being prepared for, what do you suggest, sir? We have the best shot. See, 322 वैकेंसी हैं, पिछले 20 साल से नहीं आई. Do we have the best shot or not? That should not be the consideration. I will give my best should be the consideration. Got my point? कि अब हमारे पास भी साढ़े कोल ये मौका ही नहीं है कि भाई मैं तैयारी नहीं की, अगली बार दे देंगे. PCS आए ना आए 5 साल कुछ नहीं पता, 10 साल ना आए. हले मान साहब ने कोई बेईमान साहब आ जान फिर, तो वी कैन नॉट बी श्योर. ये अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी बनती ही नहीं. एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी? अरे डॉक्टर गुरसिमरत साहब, Thank you, sir. यू आर ऑल्सो हेयर. Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਲਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ. ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੋਜ਼ ਹਿਮ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ UPSC ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ? UPSC ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ? ਐਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲੇ 20-50 ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜੈਸ਼ਨ? I think just stick to the schedule, keep it basic, subject-wise strategy, stick to the routine, stick to what the mentor has said. Right. Manage your self-study and manage your time.
and हो जाता है एग्जाम एंड एग्जाम. राइट, टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग, ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग. थैंक यू सर. सो मिलते हैं फिर, कदे आओ आओ इत्थे वापसी हुणे आके मिलते हैं. ठीक है जी, जाऊंगा सर. अजय तो ठीक है, ठीक पुलिस है. अकेडमी की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली. ठीक है, ठीक है. कंग्रेचुलेशनस टू यू अगेन. हर साल देनी पैंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ. आई विल शो यू द मेस्ट. हाँ, राइट राइट राइट. ठीक है डॉक्टर साहब, ऑल राइट. थैंक यू एवरीबडी. ऑनलाइन कोई और सवाल? ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਐਨਰੋਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਮਿਹਨਤ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿਓ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਓਨੈਸਟਲੀ ਐਂਡ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਏ, ਤਾਂ ਵੀਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਲੀਅਰ. ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ. टाइमिंग 6 ਤੋਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ टाइमिंग 6 to 8. ਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ. ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਰਾਈਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ. ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰੋਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਆਫਲਾਈਨ. ਸੀ ਯੂ. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟਸ ਸਕਸੀਡ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਦਿਸ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਫॉर ਅਸ. ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹੀ 100 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਯੂ, ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 100 ਸਵਾ 100 ਦਿਨ. ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ. ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਊਗੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਫਟਰ 100 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਆਰ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਆਰ ਬਿਲਵਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰਸ. ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਆ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਆਰ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਟੁਗੈਦਰ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ. ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲੱਗ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ, ਮਿਲੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ. ਲੈਟਸ ਡੂ ਦਿਸ ਟੁਗੈਦਰ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ? ਯਾਰ ਮੇਨਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਬਟ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ. ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਿਸ. ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਓ.